Today's topic is difference between delete and truncate. So these both are the commands, and one is the DML command and one is the DDL command. So if you know about DDL and DML command, so DDL command is the data definition command and DML command is the manipulation command basically. And I have taken this whole notes from this website, and you can also check from there. So let's start. So agenda of this whole session is all about to know these topics: difference between delete and truncate, then what is delete command in SQL, then use case of the delete command, and then the truncate command in SQL and use case of the truncate command. So first of all, we will go for the delete command. What is delete command? So delete command removes one or more row from the table. So basically, this command is from the DML command. So it's a DML command, data manipulation language command, that deletes the rows and tuples from the specified table or relationship in the SQL. So it deletes rows को हम टपल्स भी बोलते हैं. So rows or tuples, it deletes the rows or tuples from the table. That is a basic, you can say, definition. And you can delete any number of rows using the delete command. It is mostly combined with the where clause to delete specific rows that match a condition. So if you don't add where clause to the query, the delete command deletes all rows and empty the table. So अगर आप where clause नहीं लगाते हो तो वो सारी की सारी आपकी commands को delete कर देगा, rows को delete कर देगा, and आपका जो table है वो empty हो जाएगा. So you must have delete permission on the table to use the command. तो आपको permission होनी चाहिए कि आप delete कर सकते हो. And using the delete command, you must specify which row you want to delete using the where clause. So with the help of where clause, you can specify that here in that row or in that record you want to delete. So if you omit the where clause, the command will delete all the rows in the table, which are really what you want to do. तो हम बहुत rarely कहते हैं कि हमें सब कुछ delete करना है. Otherwise, we just want to remove specific row. So that can be only done by the help of where clause. Okay, so the basic main important thing is the syntax, right? So what is the syntax? We have to write delete from table name, where condition, and the end में semicolon. So where delete from customer is the table name, and where id is equal to 1. So in this example, delete statement will remove all the records from the customer table where id is equal to 1. So here is the use case of delete. So removing unwanted or deleted data. So of course, if you want to remove any unwanted या फिर कोई duplicate data है, to remove that we can use the delete command, and or something which you are no longer needed, और अगर duplicate है, right? So next is implementing data retention policies. So you might need to delete old employee data, जो इतना फालतू में आपका काम records बढ़ी जा रहे हैं. If you want to delete the old employee data, then you can use this delete command, and where clause में आप लगा दोगे कि जो इस ईयर से पहले के आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा डिलीट कर दोगे. देन क्लीनिंग अप आफ्टर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट. ऑफकोर्स अब टेस्टिंग में कितना ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाना पड़ता है, राइट? अब डेवलपमेंट में भी कितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं. बट आफ्टर दैट, इफ़ यू वांट टू क्लीन अप, देन यू कैन यूज़ द डिलीट कमांड टू क्लीन दैट. Then maintaining data integrity. If you have a foreign key constraints between table, you may need to delete rows from one table when corresponding rows are deleted. So अगर उसके corresponding चीज़ delete हो चुकी है, then also you need to delete the thing from the table. So that's why also you have to use the delete command. So the delete command can be used to implement this behavior. Undoing mistakes. हो सकता है कि आपने पहले कुछ गलतियां कर दी हों, तो उसको आपको सही करना है, एंड कुछ इंसर्ट गलत कर दिया हो, अपडेट गलत कर दिया हो. सो देन ऑल्सो यू कैन यूज़ द डिलीट कमांड. ओके, सो बेसिकली डिलीट कमांड हम यूज़ करते हैं टू डिलीट द रोज फ्रॉम द टेबल, राइट? Now, what is truncate command in SQL? So truncate command is used to remove all rows from the table. So truncate सब कुछ remove कर देता है. Here's the basic difference. So SQL truncate in DDL, that is data definition language command, delete all rows in the table.
SQL Server stores table data in pages. The truncate command deallocate pages and delete rows. Make an entry in the transaction log to free the page. Not all row deletions are recorded in the transaction log, unlike the demand delete command. And the truncate command does not use a where clause. तो सब कुछ ही डिलीट हो जाता है टेबल में से, मतलब टेबल डिलीट नहीं होता है पर टेबल की सारी रोज डिलीट हो जाती हैं. And when you use the truncate command, the table structure is preserved, but the data is lost. So that is the main important difference between the truncate and delete. दोनों से delete हो रहा है, दोनों से rows delete हो रही हैं, but truncate से सारी की सारी rows delete हो रही हैं, whereas from the you can say delete command सिर्फ वो या तो आप सारे delete कर दो, that is also same as truncate. But if you want to delete specific records using the conditions, then that can be only done by the help of delete command. So here is the structure of truncate. Truncate table, table name, same truncate table. इस table को truncate करना है. So that's the difference here. Like delete from table name and where condition, and here truncate table. अब यहाँ पे हमने टेबल लिखना है, ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल. बट इन द डिलीट कमांड वी डोंट राइट टेबल, बिकॉज हम टेबल के अंदर की चीज़ कर रहे हैं, अंदर के डेटा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं. बट वी आर नॉट taking something, or we are not doing something with the table. So truncate table customers. In this example, the truncate statement will delete all the rows from the customer table, leaving an empty table with the same column and the primary key. Then the use case of truncate. So resetting data. In the case of data resetting, you need to remove data and use the truncate command. So for example, you might want to clear the content of the log table periodically to free up space. So that's why we can use truncate command, ताकि सारा डेटा आपका एक बार में डिलीट हो जाए. Then removing large data set, बहुत सारा डेटा है, आपने एक एक करके रिमूव करने से अच्छा आप एक बार में रिमूव कर दो क्विकली एंड एफिशिएंटली, राइट. देन रिमूविंग टेस्ट डेटा, बहुत सारा टेस्ट डेटा बना रखा है आपने, बट इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो एक बारी में आप सारा खाली कर सकते हो. Then resetting auto increment counters. While using the auto increment column in the table to generate primary key, truncating the table reset the counter for that column to the initial value. तो reset करने से वो initial value पे चला जाएगा. So this is why we use truncate command. So now let's talk about the most important topic जो के बारे में पूरी session है, that is the delete और truncate का difference. राइट पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ें इसलिए बताई बिकॉज यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ डिलीट, व्हाट इज़ ट्रंकेट, उनके यूज़ केसेस. सो नाउ जब हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे डिफरेंस के बारे में, यू विल बी मोर अवेयर अबाउट द डेफिनेशंस एंड द यूज़ केसेस, राइट. सो लेट्स सी. सबसे पहले ये तो पैरामीटर हो गया. देन द ऑपरेशन. सो डिलीट स्पेसिफिक रो को डिलीट करता है फ्रॉम टेबल with a specific condition where close, whereas truncate में सारी की सारी rows delete हो जाती हैं. मेजर डिफरेंस यही हमने दोनों यूज केस में और डेफिनेशन में पढ़ा है. देन रोल बैक. डिलीट को रोल बैक किया जा सकता है, कैन बी रोल बैक यूजिंग द ट्रांजेक्शन लॉग और बैकअप, बट ट्रंकेट को रोल बैक नहीं किया जा सकता. बेसिकली टेबल के साथ, टेबल के अंदर जो DDL है ना, जो उसमें मोस्टली किसी का भी रोल बैक नहीं हो सकता. अगर आप ये कुछ भी ड्रॉप कर दो या कुछ भी, तो इसका बैकअप नहीं होता है, बट जो DML है उनका बैकअप होता है. Then identity does not reset the identity of the table primary key or any associated indexes, whereas in truncate reset कर देता है identity of the table primary key and the associated indexes. In delete, what it triggers any associated triggers and constraints on the table, whereas in truncate does not trigger any associated triggers or constraints on the table. Speed slower than truncate. Delete की स्पीड स्लो है, एज इट डिलीट वन रो एट ए टाइम, whereas truncate फटाफट सारा कुछ डिलीट कर देता है. सो दैट इज फास्टर देन डिलीट एट एज इट deallocates all the pages at the once. Then resources. Delete में क्या है, consumes more transaction log space and generate more logs and blocking.
वेयर एज इन ट्रंकेट कंज्यूम लेस ट्रांजेक्शन लॉक, क्योंकि इसमें लॉक्स होते ही नहीं है, कुछ भी बैकअप नहीं होता, एंड स्पेस कम होगी, जनरेट फ्यूअर लॉक्स एंड ब्लॉकिंग। ओके, सो डिलीट में हम वेयर क्लोज को यूज़ करते हैं फॉर द स्पेसिफिक कंडीशन के लिए कि कहाँ कौन सी रो आप डिलीट करना चाहते हो, वेयर एज इन ट्रंकेट डज नॉट सपोर्ट द वेयर क्लोज। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।